हम करने वाले हैं एमसीक्यूज ऑन इंडियन इकोनॉमी। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन 2025 इंडिया pushed toward becoming a global semiconductor hub primarily aligns with which policy object? A. Reducing fiscal deficit. B. Strengthening strategic autonomy in critical technologies. C. Expanding agricultural exports. D. Increasing FDI in retail trade. इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द RBI's digital public infrastructure for credit initiative aims primarily to A. Fully replace commercial banks with digital lenders. B. Reduce NPAs through improved credit underwriting. C. Allow crypto-based lending. D. Implement capital towards on digital payments. So correct है वो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एज पर इंडियाज एक्सपेक्टेड 2025 एनर्जी स्ट्रेटजी द लार्जेस्ट शेयर ऑफ न्यू कैपेसिटी एडिशन इज projected to come from A. Coal, B. Natural gas, C. Renewable energy, D. Nuclear power. क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर फोर है, a rise in India's core inflation accompanied by falling headline inflation typically suggests A. Rising food and fuel prices, B. Declining food and fuel inflation, C. A strong rupee against the dollar, D. Higher agriculture productivity. इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर फाइव है, अंडर द PM गति शक्ति मास्टर प्लान which sector benefits most from multi-modal connectivity in logistics? A. Tourism, B. Manufacturing and exports, C. Mining, D. Household services. क्वेश्चन फाइव का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, द इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म by the EU will most significantly impact which Indian export sector? A. Pharmaceuticals, B. Iron and steel, C. IT services, D. Textiles. इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आयरन एंड स्टील। क्वेश्चन नंबर सेवन है, इन 2025 India's demographic structure is best described as A. Aging rapidly with shrinking labor force, B. Stable with no demographic dividend, C. Youth heavy with rising working age population, D. Majority population above 60 years of age. इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर एट है, a fall in India's current account deficit along with stable exchange rates is most likely due to A. Higher gold imports, B. Higher crude oil prices, C. Strong service exports and resilient remittances, D. Lower FDI inflows. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर नाइन है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज प्रोडक्शन लिंक्ड incentive schemes is to A. Promote import of cheaper raw material, B. Boost domestic manufacturing and global competitiveness, C. Reduce digital payments, D. Increase agriculture subsidies. The correct answer is option B. Question number 10. The term green GDP, increasingly discussed in 2025, refers to GDP adjusted for A. Fiscal deficits, B. Environmental degradation, C. Digital penetration, D. External debt. इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ RBI conducts an open market operation purchase, the immediate effect is A. Liquidity contraction, B. Liquidity expansion, C. Fall in bank credit, D. Appreciation of the rupee. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 है,
The major challenge of India's 2025 target of becoming 5 trillion economy is A. Low digital adoption, B. Insufficient demands for electronics, C. Slow growth in high productivity manufacturing, D. Falling services exports। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 है द ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी ऑफ इंडिया फोकसेस ऑन A. Expanding space research, B. Sustainable use of ocean resources, C. Increasing inland forest cover, D. Developing desert agriculture। इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी। क्वेश्चन 14 है India's fiscal consolidation roadmap 2025 under the FRBM framework aims to A. Increase revenue deficit, B. Achieve fiscal deficit below 4.5 of GDP, C. Remove GST completely, D. Adopt a fixed exchange rate regime। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 है A sudden increase in reverse repo borrowings by bank indicates A. Banks have excess liquidity, B. Banks are facing a credit crunch, C. RBI has stopped liquidity operations, D. Interest rates are falling sharply। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए।